Hello everyone, my name is Aastha. I welcome you all to our classes for International English Olympiad for class 10th. Today is our 12th class in the series and our topic is articles. Articles can be very tricky if you don't know when to use the exact articles, so we will be doing them in detail, the definite ones, indefinite ones. Also, we will be solving questions so that you can recognize when to use which article, when not to use any article. So let's get started. So what are articles? सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल्स होते क्या हैं? Article is a word that combines with a noun to specify the type of reference to the noun. Oh my God, ये क्या मीनिंग दे दिया? बट आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस आप इसका बेसिक मीनिंग समझते हैं, फिर हम जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो ये मीनिंग क्लियर हो जाएगा. An article is a word that combines with a noun. ये तो समझ आ गया कि जो आर्टिकल है वो नाउन के साथ यूज होगा. To specify the type of reference to the noun. To specify the type of reference to the noun. मतलब आर्टिकल जो वर्ड है वो नाउन के साथ यूज होगा और स्पेसिफाई क्या करेगा? टाइप ऑफ रेफरेंस टू द नाउन. ये रेफरेंस होगी दो तरीके की. वन कुड बी स्पेसिफिक, ओके, एंड द अदर कुड बी जनरल. ये जो दोनों रेफरेंसेस हैं हम समझेंगे कि कैसे कैसे आर्टिकल्स में यूज होती हैं. तो एक चीज हमने समझी कि ये नाउन के साथ यूज होगा एंड दूसरा ये हमें बताएगा रेफरेंस. रेफरेंस मतलब कि या स्पेसिफिक है या जनरल है. ओके, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए लेट्स स्टार्ट. नाउ there is a list of articles जो पहले हम पढ़ेंगे और उनके हिसाब से एग्जाम्पल्स लेंगे. A and the बहुत इजी है, बहुत बेसिक है, and only 3 examples we have. A and the. सबसे पहले हम करेंगे indefinite articles. दो तरीके के आर्टिकल्स होते हैं. फर्स्ट इज indefinite, सेकंड करेंगे हम definite. तो पहले हम करते हैं indefinite articles. All right. A and an. 3 आर्टिकल्स हम पढ़े हैं. A and the. तो इसमें से A, an, A and an. Both of these are indefinite articles. When are they used? They are used when we do not refer to any particular person or thing. मतलब किसी भी particular person या thing में जब refer नहीं कर रहे. Which means generally. जब हम किसी भी general person या thing की बात कर रहे हैं तो हम a या फिर an यूज करेंगे. कैसे वो हम एग्जाम्पल्स में समझेंगे. All right, so the first type of articles, for the indefinite articles, we are going to study now the words which are singular, which are countable nouns, and they begin with a consonant sound. क्या आपको देखने में लग रहा होगा कि इतनी सारी कंडीशंस याद कर रखनी पड़ेंगी, पर ऐसा नहीं है. हम एग्जाम्पल समझेंगे तो यू विल सी हाउ इजी इट रियली इज. ओके, सो हियर यू सी ही इज अ पुलिसमैन. हियर द आर्टिकल बीइंग यूज्ड इज अ. Now let's see why is a being used. You see the noun. The noun here is singular. Singular matlab it is only one policeman that we're talking about. We're not talking about multiple policemen, right? Singular ho gaya. Then it is countable because you can count the policeman is only one. And consonant sound because per starts per, that this sound is a consonant sound.
So we are using a. Okay, then she doesn't own a house. What are we using a for? We are using it for house, and house is singular because we're just talking about one singular house, one particular house, and it is countable also. And then it begins with a consonant sound. House begins with the sound her, and her is a consonant sound. So all the three conditions. So now it is we are using a here. Then similarly for the third example, it says I have a pen. Now pen, it is for the noun pen for which a is being used. Pen is singular, only one single pen. It is countable and it begins with a consonant sound. Starts with per. Per is a consonant sound. So we are using a here. समझ गए कि जब सिंगुलर हो, काउंटेबल नाउन हो और कॉन्सोनेंट साउंड हो तो हम क्या यूज करेंगे? अ. Now let's see the next conditions. Okay, so here in the next formation we have singular. जब सिंगुलर वर्ड हो, काउंटेबल नाउन हो और वॉवल साउंड. यू सी, उसके हम एग्जांपल्स लेते हैं. सिंगल एंड काउंटेबल नाउन तो सेम है, बस हमें देखना है वॉवल साउंड क्या होती है. फर्स्ट एग्जांपल सेज आई एम एन एक्ट्रेस. सो जब देखो, जब सिंगल हो, काउंटेबल नाउन हो और वॉवल साउंड हो तो हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? एन. ओके, आई एम एन एक्ट्रेस. एक्ट्रेस, एक्ट्रेस इज सिंगुलर नाउन. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट अ सिंगल एक्ट्रेस. इट इज अ काउंटेबल नाउन एंड इट इज बिगिनिंग विद अ वॉवल साउंड. स्टार्ट हो रहा है एक्ट्रेस. ए जो साउंड है दैट इज अ वॉवल साउंड. सो वॉवल साउंड. सो वी आर यूजिंग एन. ओके, नेक्स्ट, ही डिड नॉट गेट एन इन्विटेशन. इन्विटेशन को देखना है. इन्विटेशन जो है वो सिंगुलर है, काउंटेबल है और वॉवल साउंड है. वॉवल साउंड कैसे है? Invitation, A is a vowel sound, so it is starting with, so we are using the article an. Okay, now the third example, she had an infection. हम यहाँ पे देखेंगे अपने word infection को. It is singular, we are talking about one infection, we are talking about a countable noun, and infection starts with a I. So this one again starts with a vowel sound and we will be using the article an. तो हमने देखा कि जब सिंगुलर हो, काउंटेबल नाउन हो, वॉवल साउंड हो तो हम यूज करेंगे an. और पिछले में जब सिंगल था, काउंटेबल नाउन था, पर जब कॉन्सोनेंट था तब हमने क्या यूज किया था? देन वी यूज्ड अ. अब वॉवल के लिए वी हैव यूज्ड एन. राइट? आई होप इट इज क्लियर. लेट्स मूव ऑन. Okay, so the next category is in agreement with adverb or adjective if any. Now this one means अगर कोई adverb होगा या कोई adjective होगा तो हम उसके reference में कोई उसके reference के साथ हम कौन सा article use करेंगे. Okay? So इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि adjectives क्या थे और adverbs क्या थे. एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम. Adverbs क्या थे? Adverbs were the words which answer the questions like
which answer the questions of, there were these 5 questions. If you remember, just write them down. When, where, how often, and to what extent. Okay, these were the questions which were being answered by adverbs and adjectives. Adjectives were what words? Adjectives were the words which describe something. Okay, so अगर कोई adverb आएगा या adjective आएगा तो हमारे articles कैसे use होंगे? Let's see that now. Just erase this. Okay. So these are the examples. Now, in examples में हम adverb और adjective करने से पहले let's do one thing. These are these 2 examples. अब इन examples में आप ये दोनों हटा दीजिए और यहाँ पर भी ये हटा दीजिए, ठीक है। और सोचो कि यहाँ पे एक ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक है। तो अब आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज होगा। This was the question which we did in previous slide as well. I am dash actress. Actress जो है, it is a singular, it is a countable noun, but it is beginning with a vowel sound. Vowel sound. Actress, a. That's a vowel sound. So यहाँ पे the article used will be an. Right? Up the next example, he did not contract dash disease. Now here, disease के पास हमें article use करना है. So disease is singular, it is countable, but it is beginning with a consonant sound. And the ones which begin with the consonant sound, we use the article a. Right? But now you have to notice the difference. यहाँ पे हमारे पास a young and an infectious है. तो अब यहाँ पे आर्टिकल्स कौन से यूज होंगे? यहाँ पे जब हमारे पास ये वर्ड आ जाता है young. Young क्या है? एक adjective है. Why is it an adjective? Because you remember we learned that adjectives are the words which describe something. And what is this word young describing? It is describing the actress. Actress. So young is an adjective. And now young is beginning with a consonant sound. Here. So here we will be using the article a. तो जब हमारे पास adverb या adjective हो तो हम sound जो देखेंगे वो हम देखेंगे उस adverb या adjective की, जो noun है उसकी नहीं, जो adverb या adjective उससे पहले आ रहा है. Alright? Similarly, in the second example, we have an infectious disease. Now here the adjective is infectious because it is describing what? It is describing the disease. यहाँ पे भी we will be using the article an. Why? Because infectious, it starts with a vowel sound. Infectious. A. Right? So ऐसे ही हमने देखा कि अगर यहाँ पे adverbs और adjectives नहीं होते तो हमारा completely opposite होता. यहाँ पे हम an use करते और the second one में हम a use करते. But यहाँ पे because adverb या फिर adjective है, so we are using a and an. क्यों? क्योंकि we will be seeing the sound of the adverb or the adjective and not the noun. Alright? I hope you have understood. Now let's move on to the next category. So the next category tells us sound is important, not the letter. Okay? Now
You see, sound is important, not the letter. This one means, हम example से देखते हैं. जैसे you see this. यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि हम जब कॉन्सोनेंट साउंड हो, कॉन्सोनेंट जब कॉन्सोनेंट साउंड हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो और जब वॉवल साउंड हो. जब कॉन्सोनेंट साउंड हो तो वी यूज अ, एंड जब वॉवल साउंड है तो वी यूज एन. अब आपको रिमेंबर करना है कि यहाँ पे हम साउंड की बात कर रहे हैं, लेटर की नहीं. मतलब कोई लेटर ऐसा भी है जो कॉन्सोनेंट होगा पर उसकी साउंड वॉवल की होगी, या फिर कोई वॉवल होगा पर उसकी साउंड कॉन्सोनेंट की होगी. लेट्स सी द एग्जांपल्स. यहाँ पे आप देखो, शी इज अ यूरोपियन सिटीजन. नाउ यूरोपियन, यूरोपियन जो है इट इज स्टार्टिंग विद एन ई. नाउ ई इज अ वॉवल, ई वॉवल है पर इट इज अ वॉवल, बट इसकी जो साउंड है इट हैज अ कॉन्सोनेंट, has a consonant sound. वॉवल होते हुए भी साउंड कॉन्सोनेंट की है. यूरोपियन, य इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो हम यहाँ पे अ यूज कर रहे हैं. ओके. सिमिलरली फॉर ही गोज टू अ यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी ऑल्सो, यूनिवर्सिटी इज बिगिनिंग विद अ वॉवल, बट जो साउंड है यूनिवर्सिटी य, दैट इज a consonant sound, so we will be using article a. Then next examples, next set of examples, you see I will reach in an hour. Here r जो है, this is starting with the consonant but जो sound है वो vowel की है. An r is a starting with the vowel sound, so we will be using the article an. Similarly, she got an F in her exam. An F है तो हमारा consonant, पर sound क्या है? F. A से start हो रहा है, A is a vowel sound, so we will be using the article an. All right. I hope you have understood कि हमें साउंड इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एंड लेटर नहीं. लेटर तो वॉवल भी हो सकता है, कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, पर उसकी साउंड उससे ऑपोजिट भी हो सकती है, तो हमें साउंड पे ध्यान देना है. ओके. ओके. सो हम जब इनडेफिनेट आर्टिकल्स के लिए पढ़ रहे हैं तो ये हमारी लास्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वी ओनली यूज देम फॉर सिंगुलर एंड नॉट प्लूरल. ठीक है. देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है हमने. आई सॉ अ bears in Yellowstone National Park. bears s, this is plural. So जैसे कि हमने शुरू में भी पढ़ा था कि जो हमारे indefinite articles हैं we only use them for singular and not for plural. ये plural है तो यहाँ पे नहीं यूज होगा, यहाँ पे अ नहीं यूज होगा. दिस इज इनकरेक्ट. बट जब है I saw bears in Yellowstone National Park, so bears में there will be no article used, right? अगर सिर्फ a bear होता it would have been bear. I saw a bear, तो हम अ यूज करते. ओके. दिस इज easy. Now let's move on to the next category.
Okay, so now we are moving towards the next category of articles. हमने अभी पढ़े थे indefinite articles. Indefinite. Those were the ones which were एक था a and the other one was an. यहाँ पे अब हम करेंगे second category of articles which is definite articles, and the only article we have in this category is the. The कब यूज होता है? When we are referring to any particular person or thing. जब हम specific बात कर रहे हैं, definite चीज की बात कर रहे हैं, specific. हमने देखा था ना indefinite में कि हम किसी general चीज की बात कर रहे हैं, पर यहाँ में हम एक particular person या thing की बात कर रहे हैं. Alright, let's see the examples. Now you see when it is used, when the is used. First, it is used to talk about people and things we have already mentioned. देखो example. She's got 2 children, a girl and a boy. हमने पहले बताया कि she's got 2 children, a girl and a boy. हमने generally बताया कि एक लड़का है, एक लड़की है. पर हम जब उन्हीं गर्ल एंड बॉय के बारे में दोबारा बता रही हैं, जब वी आर मेंशनिंग देम अगेन, सो व्हाट आर वी यूजिंग? वी आर यूजिंग द बॉय, मतलब वही पर्टिकुलर बॉय 14 है और वही पर्टिकुलर गर्ल शी इज 8. ओके, सो इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट पीपल एंड थिंग्स वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, जब हम उन्हीं को रेफर करते हैं दोबारा. सेकेंड कैटेगरी, व्हेन वी आर सेइंग which people or things we mean, जब हम किसी को particularly point out करके बता रही हैं generally. तो जैसे यहाँ पे example है, who's the girl in the car over there with John? हम एक particular लड़की की बात कर रही हैं, एक लड़की है John के साथ कार में, so who is the girl in the car over there with John? Okay, the girl, the car, specifically बात कर रहे हैं, कोई रैंडम बात नहीं हो रही. यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक गर्ल के बारे में बात कर रही हैं, पॉइंट आउट करके. थर्ड, व्हेन इट इज क्लियर फ्रॉम द सिचुएशन व्हिच पीपल और थिंग्स वी मीन, मतलब जैसे कुड यू प्लीज पास द सॉल्ट. जो टेबल है, टेबल पे यू नो देयर इज सॉल्ट पेपर के जो बॉक्सेस होते हैं, से could you please pass the salt, तो हम specifically salt की ही बात कर रहे हैं. It is clear कि which salt we're talking about, which thing we're talking about. So the salt. Okay, the is very easy. Now next, okay, now when there are few more categories, कहाँ the use होता है. थोड़े एग्जाम्पल्स हैं आपको समझाने के लिए. जैसे यू सी सुपरलेटिव्स. सुपरलेटिव्स जैसे हमने पढ़ा था एडजेक्टिव्स में होते हैं थर्ड डिग्री, जब हम बताते हैं कुछ हाईएस्ट लेवल या लोएस्ट लेवल. तो यहाँ पे जैसे हम कह रहे हैं एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. द हाईएस्ट माउंटेन, सबसे बड़ा, मतलब एक ही तो हाईएस्ट माउंटेन होगा, 2 हाईएस्ट माउंटेन तो नहीं हो सकते ना. तो हम एक स्पेसिफिक उसकी चीज की बात कर रहे हैं which is the highest mountain. So we will be using the article the here. Okay. Now next, inhabitants of a country. Now here the example, inhabitants होते हैं जो किसी कंट्री के जो सिटीजन्स होते हैं, जैसे ब्रिटिश, जैसे इंडियन, the Indian people, the Indian live in India. वैसे ही the British, क्योंकि ब्रिटिश तो एक ही कैटेगरी है, हम स्पेसिफिक लोगों की बात कर रहे हैं. तो inhabitants of a country के लिए भी हम the यूज करते हैं. होली बुक्स, क्योंकि होली बुक्स जो होती हैं रिलीजन की एक ही होती है, there is only one Bible, right? So we refer to it the Bible. The Bhagavad Gita, the
कुरान. नेचर के लिए द अर्थ, द सन, द स्काई, द स्टार्स. रिवर्स, रिवर्स भी एक देयर इज ओनली वन गंगा, वन कृष्णा, and the Thames. All these rivers, this is only one river. The Ganges, the Krishna, the Thames. Okay. Then seas and ocean. ये भी सिर्फ एक एक चीज ही है ना दुनिया में. So the Arabian Sea, the Pacific Ocean, mountain chains again. Himalayas की एक ही mountain chain है. So the Himalayas, the Andes, the Nilgiris. Okay. Monuments, again there is only one Taj Mahal in the world, so इसको हम specifically point out कर रहे हैं, the Taj Mahal. And then the Red Fort, we have the Eiffel Tower, we have the President, the Prime Minister. The अब musical instruments के लिए we will refer to it, the violin, the guitar, the flute. For directions as well, हम point out जब करते हैं directions के लिए, then again we use the east, the north, the south, the west. Countries with plural names, the Philippines, the West Indies. जिससे और हम कहते हैं the United States of America, the United States of America. Okay. Then words such as last and next, the last phase, the next candidate. And ordinal numbers के लिए भी the first edition, the second row. देखो फर्स्ट एक ही होगा, लास्ट भी एक ही, सेकंड भी एक ही होगा, इधर लास्ट भी एक ही होगा, नेक्स्ट भी एक ही होगा. तो हम सिर्फ स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं. यहाँ पे हर जगह आप देखोगे कि हम जब स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो वी आर यूजिंग द वर्ड द. ओके. So ये थे few examples of the. Now let's move on. Okay, so now we have the final revision for the article usage flow chart. अगर आप ये आर्टिकल का जो फ्लो चार्ट है ये आप समझ गए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कोई भी आर्टिकल लगाना. Let's see. Now, first question you ask yourself is, what kind of noun am I describing? अब ये देखते हैं कि अगर हम एक स्पेसिफिक आइटम डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसके 3 कैटेगरीज हैं. इसमें अगर हम फर्स्ट कैटेगरी लेते हैं कि इफ आई एम डिस्क्राइबिंग वन स्पेसिफिक आइटम, तो अगर तो ये नाउन मास नाउन है या प्लूरल है तो प्लूरल में हम क्या यूज करेंगे, द. अगर कोई स्पेसिफिक आइटम है और सिंगुलर है तब भी हम द यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक आइटम है. स्पेसिफिक आइटम जब सिंगुलर होता है तो वी यूज द. ऑलराइट. पर स्पेसिफिक आइटम अगर प्रॉपर नाउन है तो हम द नहीं यूज करेंगे. जैसे इफ आई रेफर टू माय नेम, आई से गिव दिस पेन टू आस्था. आस्था इज अ प्रॉपर नाउन, राइट. आस्था स्पेसिफिक भी है, पर यहाँ आस्था प्रॉपर नाउन है तो हम ये नहीं बोलेंगे गिव दिस पेन टू द आस्था. वी विल जस्ट से गिव दिस पेन टू आस्था. ओके. यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, सो नन. नाउ नेक्स्ट कैटेगरी है वन आउट ऑफ मेनी. जब हम वन आइटम आउट ऑफ मेनी डिस्क्राइब कर रहे हैं तो या तो प्लूरल है तो कोई भी नहीं यूज होगा. पर अगर वो सिंगुलर है अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो वी विल बी यूजिंग अ कॉन्सोनेंट साउंड. रिमेंबर कॉन्सोनेंट साउंड. अगर वॉवल साउंड से तो वी विल बी यूजिंग एन. देन
Third category will be which is one which represents all cases everywhere. Which kind of noun? We are describing the one which represents all cases everywhere. अगर plural है तो कुछ नहीं, और अगर singular है तो we will be using the. Okay? क्योंकि ये जो है this is representing all the cases everywhere. ये एक specific है जिसका कोई alternative नहीं है. It is being representing everywhere the same. So the. This is the article usage chart. Okay, so हम अपने indefinite and definite articles दोनों रिवाइज कर चुके हैं. Indefinite में हमने पढ़ा था a and an. Definite में हमने पढ़ा था एक the. So a कब यूज होता है, an कब यूज होता है, and the कब यूज होता है. हम सबके एग्जाम्पल्स भी देख चुके हैं, सबकी यूजेज भी देख चुके हैं, और इनके एक्सेप्शंस भी देख चुके हैं, एंड इनका फ्लो चार्ट भी देख चुके हैं. नाउ इज द टाइम फॉर आवर क्विज. अब जो ये क्विज है, हम क्विज लेंगे, 1 by 1 क्वेश्चंस लेंगे, एंड इसमें आपकी रिवीजन हो जाएगी. These questions are based on the sample questions as per the IEO pattern. Okay. Alright. So for the quiz, what we will be doing is, now every question you will be given 1 minute. 1 minute means 60 seconds. Why am I giving you 1 minute? Because you see, your question paper of IEO, it has about 50 questions, and so you can imagine that you get more or less a minute to answer the questions. Now this 1 minute is the maximum that you should be taking for answering the question. Now suppose there could be two, three categories of students. First category is, suppose you answer the question within that 1 minute. So I would request you to fast forward the video and skip right to the answer. You should not be wasting your time. Alright. Now the other students who are not able to answer the question in 1 minute, what you do, you don't skip to the answer. You pause the video and you write down your answer. Alright, it is very important to answer each and every question because there is no negative marking. Here you see, for every incorrect answer, no points, because there is no negative marking in IEO. So it is important that you attempt all the questions. Now for a question of which you are not sure about the answer, now even here and even in the exam, if you are not sure about the answer and you maybe think that B option might be correct or C option might be correct, so you should in that case play your luck and play your mind and make a guess and still give an answer, because it is a win-win situation. Either you will get the marks for that question or you will get a 0, right? But if you don't attempt that question at all, then you are anyway getting a 0 in that, right? So it is good to attempt those questions, and even if you don't know all the answers, try to understand and take a guess. Okay, so this is for every correct answer 10 points. This is just for your own little game where you can try to maintain a notepad. So here you write the name of the chapter and then the question, and then if it is correct you can give yourself 10 points. If it is not correct, you mark it here. So it is important to see these questions, the ones which you mark incorrect. It is important to go back to them later and then see where you did the mistake. Alright, this is just for your reference. For every correct answer you can give yourself 10 points. Alright, now let's start.
Alright, so now we start off with the questions on articles. Here this one says, fill in the blanks with the most suitable articles. My brother is dash soldier, he is in dash army. So articles definite or indefinite we'll figure out as and we start off with each blank. Like here we have my brother is dash soldier. So for soldier, are we giving a specific reference or are we giving a general reference? So here we'll be filling in my brother is a soldier and he is in dash army. So for army we refer to the, he is in the army. So my brother is a soldier, he is in the army. Correct answer is A. Okay, here, do you drive on dash right or on dash left in the USA? On dash right or on dash left in the USA. So here we'll be using in the right or the left in the USA. Correct answer is D. Okay, here we have Rohit's grandfather watches dash TV a lot while he is always seen using dash internet. Okay, so here TV and internet, for them both of these we are not giving any reference, just talking in general. So Rohit's grandfather watches TV a lot while he is seen using dash internet. So correct answer is C. No article and no article. Alright, here we have David is going to dash cinema but his father is going to dash church. So here for cinema we use here the cinema. David is going to the cinema but his father is going to church. Right. We don't go to the church. If there would have been name of a specific church, then we would have used this particular church. But just in general terms, we just say going to church. Okay. So yes, the answer is A. Yes, the answer is A. Okay, next up we have Storm is studying dash English and dash physics. Okay, in here subjects we don't use any article over here. Tom is studying English and physics. Okay, correct answer is C. Okay, here we have dash France and dash United Kingdom are separated by dash English channel. You take it one by one. France is the name of a country, but here we do not use any article, because this is not in plural. Like for USA, we use the, and here also United Kingdom, referring to the kingdom. Okay. Again, here we use the, so France and the United Kingdom are separated by English Channel. So your English Channel is the name of a particular sea water body. So for that particular water body, we again use the. So accordingly, the correct answer is A. France and the United Kingdom are separated by the English Channel. Okay, next up we have dash Corsica is an island in dash Mediterranean Sea. Here we see Corsica again, like explained for France, don't have to mention any article. So Corsica is an island in dash Mediterranean Sea. Specific, when we're referring to water bodies, we use the article the. So Corsica is an island in dash in the Mediterranean Sea. So the answer is C. Alright, here we have, it's dash nice morning, let's go for dash walk. It's just talking in general, giving a general reference. So it's a nice morning, let's go for a walk. Okay, correct answer is A.
Okay, here we have Moni got dash last position in his class dash last year. So here, first of all, you refer to this last. This last is talking about a certain upper level or the lower level of something. So last, lower level. Moni got the last position in his class dash last year. So don't use any article here. Moni got the last position in his class last year, just referring to last year. Correct answer is C. Alright, here we have to fill in the blank with in the given passage with the most appropriate options. Let's see. We thought of going for trekking or for dash picnic during the weekend. For picnic, for and picnic, for the picnic. So here we just referring to picnic in general. So we say thought of going for a picnic. General reference we are giving. A picnic during the weekend. So finally we decided to go on dash trek. So out of this trek and picnic, these people, they decided to go on what? Go on a trek. Any general trek they decided to. Alright. Then we have one cool Sunday afternoon, we went to dash foothills of a nearby hill. We parked our vehicles there and started walking. So we went to dash foothills. So here we are referring to foothills. That's first of all, that's plural. So, and we are talking about a specific hill, right? So the foothills of a nearby hill. C. Then we have dash walk was refreshing and relaxing. Okay. So here we are talking about a particular walk. That's why we'll be referring to the definite article. The walk was refreshing and relaxing. Then here we say very soon we reached dash top of dash hill. Okay, dash top. So top, there is going to be only one particular top, right? So we say we reached the top. Okay. So we reached the top of here. Again, the specific hill. So we reached the top of the hill. Okay, here we could see dash aerial view of the whole town. Dash aerial view. Now this aerial view that we are referring to, giving a general reference. So, and there's aerial, indefinite article we'll use, and for aerial it starts with a vowel sound, so we use an aerial view of the whole town. Okay. Okay, next up we also saw dash beautiful temple of Lord Shiva there. So, saw one particular temple, right? Indefinite article, and beautiful starts with a consonant sound. So we saw a beautiful temple of Lord Shiva there. A. Okay, here we have how is dash weather here usually. So we'll ask with definite article, how is the weather here usually, right? Okay, so here the last question we have, how far is dash city from here? So we're giving a specific reference at how far is the city from here. Alright? Okay, so with this we finish out with our questions on articles. That's all for our class on articles. I hope you have understood the basic differences, because if you don't know the fundamentals, that can be a little tricky for you to answer the questions, or in your regular conversations. That can be a little tricky as to if you don't know which article to use in front of which word. Alright, so keep revising and keep learning.
Thank you for watching.